नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश्य पर, जहां आपको मिलते हैं एग्जाम रिलेटेड कंटेंट इन अ प्रिसाइज मैनर। और आज है हमारा बायोलॉजी सीरीज का पार्ट 5, जहां हम जानेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंड लोकोमोटिव मूवमेंट के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, नेट हो या कोई भी ऐसे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। This section is a must and you will expect questions from this section. तो pen और notebook ready रखिए and watch this video till the end if you want to grab the precise details in each sections, and we will also be giving you the exam tips and also the hint about our next series topic in this video itself. और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ला पाए आपके लिए ऐसे एग्जाम रिलेटेड कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो चलिए सेक्शन 1 में जानते हैं स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। तो द skeletal system is the internal framework of our body which is made up of bones and cartilages, जो हमारे बॉडी को शेप, सपोर्ट एज वेल एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फंक्शंस के बारे में जानते हैं, जैसे कि सपोर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, मूवमेंट एंड सपोर्ट ऑफ द एसोसिएशंस ऑफ अदर सच muscles, and then it also known as the storage for the minerals like calcium and potassium. So helps in blood cell formation in bone marrow. तो इस सेक्शन से जो आप एग्जाम टिप ले सकते हो वो होंगे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बोन मैरो और विच मिनरल्स डज इट स्टोर्स, जैसे कि आपको आंसर्स देने हैं कैल्शियम एंड पोटेशियम। और हाँ, इससे आप ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि द स्केलेटल सिस्टम, what is its main function and what is its meaning and many more. पार्ट 2 में जानते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन के बारे में, जो होते हैं 2 टाइप्स के। एक होते हैं एक्साइल स्केलेटन एंड द अदर वन इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्साइल स्केलेटन में जो इंक्लूडेड पार्ट्स हैं वो है स्कल, देन इज वर्टिब्रल कॉलम जिसका नाम है, और एक है बैकबोन, एंड द अदर वन इज रिब केज। एपेंडिकुलर स्केलेटन में है लिम्स, जैसे कि बोथ आर्म्स एंड लेग्स, फिर है pelvic girdle and the shoulder girdle as well। और ह्यूमन स्कल में टोटल 22 बोन्स होते हैं, जिसमें से 8 होते हैं क्रैनियल एंड 14 होते हैं फेशियल। तो इस सेक्शन से जो आप एग्जाम टिप ले सकते हो वो होंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्केलेटन, जिसको आपके नाम बताने हैं, एंड इट में ऑल्सो कम दैट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जिसके होंगे बैकबोन, एंड हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल, एंड in the skull itself how many are for cranial and how many are for facial. These type of questions you can expect from this section. Section 3 में जानते हैं types of bones के बारे में, जो different functions और अपनी capabilities या features के हिसाब से classified होती है। पहले टाइप के हैं long bones, for example femur, and it is also the thigh bone. Then the short bones, for example the wrist bones. Flat bones में जैसे है ribs, फिर है irregular bones, for example vertebrae. Sesamolar bones, that is patella or the kneecap. Small bones, for example the straps in the ear, it's the smallest bone. तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे which is the longest bone, which is the smallest bone, give an example of a flat bone or irregular bone, जैसे longest bone femur है, thigh bone, and the other one will be the smallest bone जो मैंने बोला है, the straps in the ear. तो सेक्शन 4 में जानते हैं जॉइंट्स के बारे में, विच कनेक्ट्स द बोन्स, एंड द जॉइंट्स आर द थिंग्स विच हेल्प फॉर द मूवमेंट। 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, एंड वन इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फिक्स्ड जॉइंट का एग्जांपल है स्कल, देन कम्स द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, दैट इज द वर्टिब्रे, एंड देन कम्स द फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिसमें साइनोवियल जॉइंट। फिर है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जैसे कि हिंज, एल्बो, नी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो प्रेजेंट होते हैं शोल्डर एंड हिप में, पाइवोट जॉइंट नेक में, एंड देन इज द ग्लाइडिंग जॉइंट विच इज प्रेजेंट इन द रिस्ट। तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, एंड नॉट ओनली द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, उसके एग्जाम्पल्स भी, एग्जाम्पल ऑफ अ फिक्स्ड जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स के भी जो टाइप्स है उसके भी एग्जाम्पल्स आपको जानने पड़ेंगे, जैसे कि हिंज जॉइंट के, देन दी शोल्डर एंड हिप ऑफ examples of which joint, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस you can expect. अब सेक्शन 5 में जानते हैं मसल्स एंड मूवमेंट्स के बारे में। बोन्स आर नॉट ओनली द मेन थिंग विच हेल्प्स इन द मूवमेंट, मसल्स का भी एक मेजर रोल होता है टू अलाउ मूवमेंट्स इन अ ह्यूमन बॉडी।
Muscles are attached to bones with the help of tendons. They work in pairs, जैसे कि one relaxes so the other one contracts, and on the contrary, one contracts so other one relaxes. And for example, biceps and triceps. It also has the need of the regular ATP for contraction. Coordination of the muscles, joints and the bones leads to the formation of locomotion, जिसको हम locomotive movement बोलते हैं. Add or notice, the full form of ATP is adenosine triphosphate. तो इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे that how is the muscles attached to the bones, with the help of what you have to mention that, and name the muscles which work in pairs, and what does the muscle require for contraction. These are the sort of questions that you can expect. तो अब सेक्शन 6 में जानते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम के बारे में. एग्जाम्स में यूजुअली कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में ही पूछे जाते हैं. फर्स्ट वन इज आर्थराइटिस, जो होते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. कम्स ओस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे बोन्स वीक हो जाते हैं एंड फ्रेजाइल, एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम. एंड देन कम्स फ्रैक्चर, दैट इज द ब्रेक इन बोन. और फिर होते हैं रिकेट्स, दैट इज द विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन. सो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि what is the inflammation of joints causes, and which is the deficiency that is caused by the lack of vitamin D, or what is the deficiency that is caused by this vitamin. You have to just name the vitamin. And then what is the loss of which mineral causes osteoporosis, such a type of questions. Section 7 में जानते हैं locomotion in other organisms के बारे में. Human beings के अलावा भी animals भी locomotion करते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं. जैसे कि amoeba uses pseudopodia, and then the paramecium uses cilia, euglena uses flagella, earthworm uses the muscles and setae, fish uses fins, and birds uses wings and hollow bones. सेक्शन से आप multiple choice questions as well as match the following questions expect कर सकते हो, where in one side the animal's name will be given and on the other side the locomotive motion parts will be given. You have to either match them in the match the following, or in the case of MCQs you have to choose one. चलिए अब थोड़ा recap कर लेते हैं in a rapid freestyle. I will be telling you some most expected questions from the whole video. It's important to learn section wise, but I will now dodge down some of the important questions which will be coming, and it's a sure of from my side. The first one is the longest bone in the human body. Second one, give an example of the ball and socket joint. Third one is the function of cartilage. Fourth one is what is the type of the skull bone. Then comes the fifth one, what is a ligament. Sixth one is what is a tendon. Then comes the seventh one, that's the vitamin needed for bone strength. Then comes the bones are made of RBCs. Then what are the smallest bones. Vertebral column is made of how many bones. So these are some of the questions which I have dodged down as one of the most important questions from this section as well as this topic. So in this video I have hopefully covered the movements. You have known about the movements in the animals as well as the human beings, known about the joints, its types and many more. I hope you have known about what is a tendon, what are its function, and what is the function of the muscles, what is the use of ATP for the muscles, as well as what are the disorders related to skeletal system, what causes those disorders. Such type of questions I have hoping for the best, as I have dodged down all the questions. So you need to go through each sections and note down all the questions and answer them in the comment box below. तो दोस्तों ये था आज के लिए ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंड लोकोमोटिव मोशन. आई होप आई हैव हेल्प्ड यू ऑल. सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर और एक सीरीज के साथ. And do not forget to like, share and subscribe our channel. And one book recommendation that I would love to give you, that is Truman's Elementary Biology Volume 1 and the NCERT Biology Class 11 and 12 as well. These books will help you to enhance more knowledge regarding this field. So keep watching us and keep supporting us. Is grateful for your support. And तब तक फोकस रहे और गवर्नमेंट दृष्टि के साथ ग्रो करें. Stay safe. Meet you in our next video.